नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। चीन से तनाव के बीच लेह में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बना खादी का तिरंगा लहराया गया है। इस कार्यक्रम में सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने भी हिस्सा लिया। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ तनाव और एलओसी पर पाकिस्तान की हरकतों पर सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने बयान भी दिया। सेना प्रमुख ने बताया कि सभी विवादित मुद्दों को एक एक करके सुलझा लिया जाएगा। लेह में शनिवार को एक कार्यक्रम से इतर सेना प्रमुख ने कहा कि पिछले 6 महीने से हालात काफी सामान्य हैं। हम अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में दोनों देशों के बीच 13वें दौर की बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। इस बैठक में गतिरोध खत्म करने को लेकर बात होगी। The situation now over the last 6 months or so has been quite normal. As you're aware, the talks have been going on for more than a year now. We had the 12th round of talks last month, and we are hopeful to have the 13th round of talks very soon, perhaps as soon as next week, that is the second week of October. We are confident that as we discuss things with each other, and we will be able to reach consensus on how this disengagement is to take place, and by all the friction points will get resolved. Even when the talks had started, people were doubtful whether talks would resolve anything, but I'm of the firm opinion that we can resolve our differences through dialogue, and that is what has happened over the last few months. So I'm very hopeful that we will be able to achieve some results. पूर्वी लद्दाख और हमारी ईस्टर्न कमांड के पास उत्तरी फ्रंट पर भारी संख्या में चीनी सैनिक तैनात है। इस सवाल के जवाब में सेना प्रमुख ने कहा कि सीमा पर चीनी सैनिकों की बढ़ती तैनाती निश्चित तौर पर हमारे लिए चिंता का विषय है, लेकिन हम हर गतिविधि पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। Yes, as you very rightly mentioned that the Chinese have deployed in considerable numbers all across eastern Ladakh, and not only in eastern Ladakh but all across the northern front, right up to our eastern command also. So definitely there has been an increase in their deployment in the forward areas, which remains of course a matter of concern for us. But we are regularly monitoring all their movements, and based on whatever inputs we get, we are also carrying out matching developments both in infrastructure as well in terms of the troops that are needed to counter any threat. So we are, I think, at the moment quite well poised to meet any eventuality. सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन की घटनाओं पर कहा है कि फरवरी से लेकर जून के अंत तक पाकिस्तान की ओर से कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ, मगर इसके बाद से लगातार घुसपैठ की घटनाएं बढ़ती चली गई हैं। Well, the ceasefire understanding was reached towards the end of February, and from February till almost end June, beginning July, there were no ceasefire violations whatsoever. But of late, there have been increased infiltration attempts which were not supported by any ceasefire violation. But in the last week or 10 days, there have been now 2 ceasefire violations also. So definitely it shows that the situation is not static and is now regressing to what it was earlier, pre-February days. We have conveyed through hotline messages and through the DGMO level talks that take place every week that this does not augur well for the understanding that we have, and they should not give support to any such activities, and especially not to any terror-related activities, which are obviously cannot take place unless they have the support of the Pakistani army. बता दें कि बीते 10 दिनों में 2 बार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जा चुका है। स्थिति एक बार फिर से फरवरी के पहले जैसे ही होती जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।